Hello everyone. Today we are going to solve a few most important MCQs on Income Tax Act 1961. So those who are preparing for All India Bar examination this year, this video lecture will be very helpful for you all. Hey everyone, my name is Sangeeta. Welcome back to this channel. Be legally aware. So without any further delay, let's start today's session. So let's see the first question. So the first question is our salary paid by an Indian company to its employees working in one of its branch outside India is, let's see the options. Option are salary deemed to accrue in India, salary accruing outside India, salary accruing in India, and none of the above. So in this case the correct option would be our option C, that means salary accruing in India. So क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन में बोला है salary paid by an Indian company to its employee working in one of its branch outside India. कोई भी एक कंपनी है वो सैलरी पे कर रहा है उसके एम्प्लॉय को, जो काम कहाँ पर कर रहा है, जो काम कर रहा है उसी कंपनी का दूसरे ब्रांच में which is situated outside India. Okay, so in this case the correct option would be option C. Okay, so now moving to next question. Next question is our C, income from सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ भी सकता है. इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड under which of the following options? Let's see the option. Option A, capital gain. Option B, income from other sources. Option C, income from house property. And option D, profit and gain of business or profession. So in this case the correct option would be option B, that means इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. दैट मीन्स अगर कोई भी एक इनकम हो रहा है जो कहाँ से हो रहा है, वो सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जो एक हाउस जो एक प्रॉपर्टी को रेंट में दिया गया है, उसी प्रॉपर्टी को फिर से सब रेंट दिया गया है, उसी प्रॉपर्टी को फिर से जो रेंट किया गया है पहले प्रॉपर्टी को, उसी प्रॉपर्टी को फिर से रेंट में दिया गया है. सो उसी प्रॉपर्टी से अगर कोई भी एक इनकम आता है, जो प्रॉपर्टी पहले से रेंट में दिया गया है एंड उसी प्रॉपर्टी को फिर से, दैट मीन्स सबलेटिंग, फिर से उसको रेंट में दिया जाता है, देन इन दिस केस जो प्रॉफिट और जो इनकम उस प्रॉपर्टी से आएगा वो कौन से इनकम के कौन से हेड में आएगा. सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर में आएगा. कौन सा हेडिंग के अंदर आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी. Okay, so now moving to next question. Next question is a very important question. देखिए, मोहन received a gift. Okay, मोहन को एक गिफ्ट मिला of ₹35,000. Okay, each from his 3 friends on 31st March 2019. So option में क्या लिखा है? 1,05,000 is taxable, 50,000 is taxable, not taxable, and option D, ₹55,000 is taxable. So देखिए, before understanding the question we should know that under the Income Tax Act, okay, under the Income Tax Act 1961, अगर कोई भी एक गिफ्ट मिलता है, ठीक है, कोई भी एक गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट ऑफ ₹50,000, देन इसका टैक्स में नहीं लिया जाएगा, दैट इज इट इज टैक्स फ्री. ओके, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री. दैट मीन्स अगर किसी को भी 50,000 रुपीज का गिफ्ट मिलता है, देन इट विल नॉट कम इनटू द इनकम ऑफ एनी पर्सन. ओके, दैट मीन्स देयर इज अ टैक्स डिडक्शन. ओके, सो क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, मोहन ने रिसीव किया है ₹35,000 फ्रॉम 3 फ्रेंड्स. दैट मीन्स देखिए, दैट मीन्स मोहन को 35,000 एक फ्रेंड से मिला, फर्स्ट फ्रेंड, एंड सेकेंड फ्रेंड से भी सेम टू सेम मिला 35,000 रुपीज, 35,000 रुपीज, एंड थर्ड फ्रेंड से भी मिला 35,000 रुपीज. सो इन टोटल उसको कितना गिफ्ट मिला? 10, दैट मीन्स 1,05,000. तो टोटल मोहन को कितना रुपीज, कितना पैसे का गिफ्ट मिला? उसको टोटल 1,05,000 का गिफ्ट मिला. सो क्वेश्चन में देखिए अभी, सो क्वेश्चन 500 इज टैक्सेबल.
50,000 is taxable, not taxable, and rupees 50,000 is taxable. So in this case, the correct option would be option A. That means 1,05,000, 1,05,000 is taxable. ठीक है, ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा. दैट मीन्स 35,000 प्लस 35,000 प्लस 35,000 सब के सब एक साथ में टैक्सेबल हो जाएगा. बट अगर ये गिफ्ट का अमाउंट बिलो या अप टू 50,000 तक होता तो ये टैक्सेबल नहीं होता. ओके, ये टैक्सेबल नहीं होता, तो ये इनकम के कैटेगरी में नहीं आता है. ठीक है, सो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन विल बी आवर ऑप्शन ए. Okay, so now moving to next question. Next question is our the benefit of exemption under section 54F is available when the following capital asset transferred. So section 54F is all about, it offers an exemption from a long-term capital gains tax on the non-residential asset. Okay, it's all about non-residential asset. Okay, non-residential asset when the gains are reinvested in a new residential property within a specific time frame. Okay, so let's see the options. So section 54 is all about non-residential assets. That means कोई सपोज अगर कोई भी एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, सपोज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है कहाँ से होता है? फ्रॉम नॉन रेसिडेंशियल एसेट. मीन्स कोई जहाँ पर लोग नहीं रहते, फॉर एग्जाम्पल एनी कमर्शियल एसेट. ओके, सो अगर कोई भी एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है फ्रॉम नॉन रेसिडेंशियल एसेट्स एंड उसका जो प्रॉफिट होता है, सपोज उसका जो इनकम होता है उस इनकम को री इन्वेस्ट किया जाता है. ओके, कहाँ पर री इन्वेस्ट किया जाता है? इन द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. सो अगर ये इनकम को रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाता है देन इन दैट केस अंडर सेक्शन 54F ऑफ IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961. ओके, सो लेट्स सी द ऑप्शंस. So the options are short-term capital asset other than the residential house property, then short-term residential house property, long-term residential house property, and any capital asset other than residential house property. So in this case, the correct option would be D. That means any long-term capital asset other than residential house property. That this case, the correct option would be option D. That means option D. Okay. So now moving to next question. So the next question is our income of minor. Okay, income of minor is clubbed. However, the clubbing provision is not applicable if that we should know that what is clubbing. What is clubbing? So clubbing of income means adding or including the income of another person. Clubbing means adding or including the income of another person to one's own income, to one's own इनकम. सपोज कोई भी एक पर्सन खुद के इनकम को उसके साथ उसने ऐड किया है और इंक्लूड किया है इनकम ऑफ अदर पर्सन, स्पेशली इट मे बी ऑफ द फैमिली मेम्बर्स. अगर कोई भी एक पर्सन का सपोज 5,000 उनका इनकम है, देन उसने दूसरों का भी इनकम ऐड किया अपने इनकम के ऊपर, सपोज 2,000. मैंने खुद का इनकम जितना है उसके साथ उसने क्लब किया, दैट मीन्स ऐड किया. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम. Okay, so this is the concept of clubbing of income, and this is allowed under section 64 the IT Act 1961. Okay, so let's see the options. So the options are parents are separated, minor is a married daughter, minor is handicapped as specified under section 8U, and none of the above. So in this case the correct option would be option C. That means income of a minor is clubbed. However, the clubbing provision is not applicable if the minor is handicapped as specified under section 80U. So under section 80U IT Act में जो provision दिया गया है, अगर as per the provision अगर minor handicapped है, then in that case the income of a minor will not be clubbed.
it will not be clubbed. So in this case, the correct option would be option C. Okay, so now moving to next question. So the next question is our case of revocable transfer of assets, all income arising from such asset to transferee shall be included. Let's see the options: income of transferee, income of transferor, both transferor and transferee, either transferor or transferee. So in this case, the correct option would be option B. That means income of transferor. That means in case of revocable transfer of assets, all income arising from such asset, ओके कोई भी एक इनकम हो रहा है फ्रॉम सच एसेट टू ट्रांसफरी को इनकम हो रहा है, ठीक है, देन इट शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर. इनकम किसका हो रहा है? इनकम हो रहा है, इनकम हो रहा है किसका? ट्रांसफरी को. बट इट विल बी इंक्लूडेड, but it will be included in the income of the, it will be included, it will be included in the income of the transferor, in the income of the transferor. Okay, so in this case the correct option would be our option B. Okay, so now moving to next question. The next question is our when parents income is clubbed with minor child income, parent is eligible for exemption. Let's see the options. Options are actual income of minor or rupees 10,000, whichever is less. Option B, actual income of minor is 1,500 or whichever is less. Actual income of minor is rupees 20,000, whichever is less. Actual income of minor is 5,000 is less, whichever is less. Okay, so in this case the correct option would be our option B. That means actual income of minor is 1,500 or whichever is less. Okay, that means actual income of minor or rupees 5,000, rupees 1,500 whichever is less means if the income is less than 1,500, if the income is less than rupees 1,500 per year, then this income will be clubbed. Then this income will be clubbed with the parents income, with the parents income, and the parents will have to pay tax, and the parents will have to pay tax. Okay, so अगर इनकम 1,500 से ज़्यादा होता है पर ईयर, देन इन दिस केस इसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू चिल्ड्रन. Okay, so question, so in this case the correct option would be our option B. Okay, so now moving to next question. So the next question is our unabsorbed depreciation can be carried forward for set of, let's see the options, for an unlimited number of years, for a period of 4 years only, for a period of 18 years only, for a period of 8 years only. So in this case the correct option would be our option A. That means for a unlimited number of years. So unabsorbed depreciation, so what is unabsorbed depreciation? Unabsorbed depreciation means the entire profits are unable to cover the depreciation charge. Unabsorbed depreciation means the entire profit are unable to cover depreciation charge. That means जहाँ पर प्रॉफिट उतना मैक्सिमम नहीं है
to compensate the depreciation charges. Okay. So in this case, the correct option would be our option A. Okay, so now moving to next question, and this is the last question. So the last question is our, which of the following loss cannot be carry forward? Okay, if assessed has not filed his return of income within time under section 139 subsection 1 of the Income Tax Act. So the options are losses under head capital gain, losses of owning or maintaining race horses, losses under head business or profession, all of the above. So in this case, the correct option would be option A, that means losses under the head capital gain. Okay, so in this case, the correct option would be our option A. Okay, that means losses under the head capital gain. So this is for all today. If you liked this lecture, please like this video and please don't forget to subscribe this channel. Till then, take care. Bye bye. See you in the next video.